PSLV vehicle up to the 4th stage at MST. These are the visuals in the satellite preparation facility for SPADEX 1 and 2. जी हाँ, यही है मुख्य उपग्रह इस मिशन के, SPADEX 1 और SPADEX 2। इनके साथ में 24 नितभार और सफर कर रहे हैं PSLV C60 में। इन सबका समायोजन तथा परीक्षण 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. That's a marvelous liftoff of PSLV PT tracking. C60 SPADEX mission on the go. Plus 15 Sleek seconds. PSLV Corellon vehicles PT tracking. saluted against the night sky, a beautiful sight to behold. First जी हाँ, stage अभी आपने देखा performance normal. सफलतापूर्ण उत्थापन PSLV C60 रॉकेट का। रात Plus को 30 रोशन seconds. करता हुआ PSLV C60 अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर PCR tracking. सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की है। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। First stage separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है यान से, तथा द्वितीय चरण PS2 Second स्टेज का stage प्रज्वलन शुरू हो performance चुका है। normal. The second stage has commenced its operation after the first stage separation. This stage burns on hypergolic earth-storable propellant combination of hydride of unsymmetrical dimethyl hydrazine and dinitrogen tetroxide. The legendary Vikas engine developing 800 kilonewtons thrust in vacuum. यान के सभी तंत्र सामान्य प्रदर्शन कर रहे हैं और द्वितीय चरण का पृथकन तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू। Second stage separated. Third stage ignited. We are four and a half minutes into flight and the third stage has commenced Third its stage operation. performance normal. द्वितीय चरण को कार्यकाल के पश्चात सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण ठोस नोदक पर आधारित तृतीय चरण, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। पूरे तंत्र पूरी तरह सामान्य कार्य करते हुए Third stage of PSLV operates Plus on 5 7.6 tons of HTPB based solid propellant. Vacuum thrust close to 240 kilonewtons. यान अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर। Third stage separated. We have a confirmation from Range Operations Director that the third stage separation has taken place Fourth stage engine started. and the fourth stage, uppermost stage PS4 is currently operating. यहाँ कोस्टिंग फेज समाप्त हो चुका है, पृथक किया जा Plus चुका 9 है। minutes. सापेक्ष गति 6.39 किलोमीटर प्रति सेकंड। उद्दिष्ट कक्षा के लिए यह ऊंचाई 476 किलोमीटर की होनी है तथा सापेक्ष गति 7.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्राप्त करनी बाकी है। This stage will operate for Fourth 271 stage seconds, performance normal. during which the rocket will ascend to 80 Plus 10 kilometers minutes. in altitude. The relative velocity is enhanced from 6.2 kilometers per second to 7.3 kilometers per second. At 13 minutes 12 seconds into flight, the PS4 shuts off. कक्षा में अंतरिक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। SPADEX B and SPADEX A satellites are separated. जी हाँ, और रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की। दोनों This is मुख्य Range उपग्रह Operation Director. बी और PSLV SPADEX A दोनों को C60 mission accomplished सफलतापूर्वक with respect उद्दिष्ट to कक्षा में SPADEX अंतरिक्षित satellite कर दिया गया separation. है।
but mission is continuing for PS4 orbital platform experiment, that is POEM-4, with 2 phases of fourth stage restart. After 2 phases of restart, PS4 stage orbit will be changed to 354 km circular. The first phase of PS4 restart happens in non-visibility period. The second phase of PS4 restart takes place in the visibility period of Shetland in orbit 2. During the non-visibility period, ground trace will be updated by extrapolation on the video wall. The non-visibility period is approximately for 3100 seconds. All the stations involved in operation shall continue in operations. Handing over to Mission Director. This is Mission Director. PSLV C60 SpadeX mission is accomplished with respect to SpadeX A and B satellites. POEM operations will continue. Thank you. A jubilant ambience here on the night of 30th December 2024. ISRO has got its own space docking experiment. Do continue to follow the social media handles of ISRO for the updates on the space handshake. Stay tuned for the address by Secretary DOS Chairman ISRO Dr. S. Somnath. We take leave from you. Goodbye.